Yes, already we have seen some MCQs in last lecture. So let us see some more MCQs from this same chapter. Okay, so let us see. I hope you can see the screen. Okay, so this is the question. Just read it carefully. A wire is bent in the form of a circular arc with straight portion PQ and magnetic induction at the point O, where when the current I is flowing in the wire is, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो ठीक से. Okay, just wait. Okay, these are the options. Now let us see how to solve this. So basically the wire is bent in the form of a circular arc with a straight portion PQ here. Okay, तो ऐसा ये circular arc है और यहाँ पे straight portion भी है. This is the straight portion and this is the circular arc like this. Okay, so here we want to find out the magnetic induction at the point O here. अभी देखो, magnetic induction at point O consists of two parts. One is the part, or one is the magnetic field due to this circular arc produced at the same point O here at the center actually, and the second is the straight current carrying conductor. ठीक है, straight current carrying conductor की वजह से यहाँ पे O point पे जो magnetic induction पैदा होता है, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो, we can just consider this situation to be equivalent to two different situations. That means we want to find out the magnetic induction due to two different shapes separately and have to add these magnetic inductions overall so that we can just get the total magnetic induction here. Okay, so the first part here is going to be a circular arc. Okay, ये circular arc है और लेकिन ये पूरा arc नहीं है. It is just wait. Yes, suppose
द आर्क इज मिसिंग हियर, मतलब यहाँ पे आर्क जो है वो इस तरह से इनकम्प्लीट है, which is making or subtending an angle which is given by, अब देखो वो एंगल भी हमको निकालना है एक्चुअली, ठीक है ना। देखो, कैन यू फाइंड आउट दैट एंगल? हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सपोज दिस इज द सेंटर and we just connect this center with this point here and here also. तो ये सेंटर को हमने इन दोनों पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी सोचो कि ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल कैसे हम निकाल सकेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि अगर ये अंदर वाला जो एंगल है वो अगर हमको मिल जाता है तो ये बाहर का एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो अंदर वाला एंगल हमको ऑलरेडी पता है, इट इज 2 थीटा, करेक्ट है। सो हियर इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ थीटा इन दिस वे। ओके, सो अगर ये 2 थीटा है तो ये बचा हुआ जो एंगल है इस तरह का, तो वो तो ऑब्वियसली 360 माइनस 2 थीटा होगा जरूर, है कि नहीं। So we can just say it will be 2 pi minus 2 theta. If we just calculate it in radian, then we can just have it as 2 pi minus 2 theta, because the full angle of a circle is all right. So this 2, अभी इस से मतलब की वजह से जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने कल ही देखा था कि मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, सबसे पहले तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द फुल सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर और कॉइल इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, करेक्ट है। बट इफ वी हैव अ मैग्नेटिक we have a circular arc in the form of a arc which is subtending an angle theta, then we can just get the formula that theta upon 360 into mu naught I upon 2r, करेक्ट है। ये फॉर्मूला हमको मिलता है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है ना कि थीटा जो है, थीटा हैज टू बी इन डिग्रीज, बट इफ इट इज इन रेडियन देन वी कैन जस्ट गेट द अनदर फॉर्मूला दैट इज b dash is equal to theta which is going to be in radian upon 2 pi, okay, theta upon 2 pi into mu naught I upon 2r, okay। ये फॉर्मूला हमको मिलता है फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन। बट अभी अगर इसको हमको यहाँ पे यूज करना है, सो वी कैन कॉल इट एज B1 हियर इन दिस केस। B1 मतलब द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, विच इज द सर्कुलर आर्क हियर। सो बट इस उसका एंगल पे angle subtended is going to be 2 pi minus 2 theta here. So therefore we can just replace this theta by 2 pi minus 2 theta actually, so that we can just get it as 2 pi minus 2 theta divided by 2 pi into mu naught I upon 2r, where r is going to be the radius of the circle, which is going to be capital R here, and current is same as I only, so therefore we can just get it as mu naught I upon 2 into capital R, okay। So this is equation number 1, we can just record it as here। So चलो ठीक है, ये तो हमको मिल गया, the first part is already obtained here, but if you just consider the second part here, then second part is in the form of a straight conductor which is here like this। So just we can take it apart here, तो यहाँ पे हम सेपरेट ले लेंगे। सपोज दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर विच इज नेम्ड एज PQ हियर, ओके, उसको हम PQ बोल देंगे। वो एक्चुअली यहाँ पे था, लेकिन सिर्फ एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, उसको थोड़ा सेपरेट कंसिडर कर लिया। और ये जो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर, सो द सेंट्रल पॉइंट हियर विल बी कंसिडर्ड एट दिस पॉइंट हियर, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी सेपरेट हियर, विच इज नेम्ड एज O हियर। तो ये O जो सेंट्रल पॉइंट है वो भी हमने सेपरेट ले लिया, ठीक है। अभी अगर हम ये सपोज ये दोनों पॉइंट्स अगर ज्वाइन करते हैं, ये O को हमने P के साथ और Q के साथ भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर जो है, स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो वो निकालने के लिए ये जरूरी है कि इसका जो एंड पॉइंट है, ये P और Q, ये जो एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट्स
इस O के साथ कितना एंगल सबटेंड करते हैं, तो वो हमको ढूंढ के निकालना जरूरी है। अगर सपोज हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे O से इस पॉइंट PQ के ऊपर, तो वी कैन जस्ट कंसिडर दिस एंगल। देखो यहाँ पे ये जो एंगल, ये P जो सबटेंड करता है एंगल, इसको हम अल्फा एक्चुअली बोल सकते हैं, अल्फा। और ये Q जो एंगल सबटेंड करता है उसको हम एक्चुअली बीटा बोल सकते हैं जरूर, ठीक है। So alpha and beta, these are the two angles which are subtended here. And in terms of these two angles, alpha and beta, we can just try to find out the magnetic induction at the point O here due to this finite straight current carrying conductor. हमने already देखा है, अगर आपको याद है कि अगर सपोज एक straight current carrying conductor होता है, अगर मान लो ये straight current carrying conductor है और इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे, चलो ये straight current conductor है और यहाँ पे हमको अगर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसका जो एंगल बना हुआ है इस अपर एंड्स के साथ और इसका लोअर एंड के साथ जो भी एंगल बनता है, तो वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। इस मिडल पॉइंट के साथ, मतलब मिडल लाइन जो है, परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो वो लाइन इस अपर पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और जो लोअर पॉइंट जो एंगल बनाता है उसको हम बीटा बोलते हैं। Or if suppose I is the current flowing through this conductor, then we find out the magnetic induction due to this finite straight current carrying conductor to be simply mu naught I upon 4 pi A into, or 4 pi R into ब्रैकेट में आ जाता है sin अल्फा प्लस sin बीटा। ये सभी को याद होगा, हमने ऑलरेडी ये थ्योरी में देखा है, ठीक है। सो इफ यू जस्ट यूज इट हियर, सो यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा, and then it will be in the bracket in this way. So this bracket will be there as a final. So we can just consider this straight conductor to be horizontal, and this horizontal line, which is perpendicular line, to be vertical like this. And these angles alpha and beta are going to be recorded here, alpha and beta. And by coincidence, here the alpha and beta are going to be same as theta only. तो ये दोनों सेम ही है और वो थीटा ही है, जिसके कारण यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से, और फाइनली हमको ये आंसर मिलेगा उसका। तो देखो, सो इफ यू जस्ट रिपीट दिस फॉर्मूला वंस अगेन, तो यहाँ पे हम फिर से ये फॉर्मूला रीराइट करेंगे। So magnetic induction due to the straight current carrying conductor happens to be mu naught into I upon 4 pi AR into sin अल्फा प्लस sin बीटा। ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर हमको रिप्लेसमेंट देने हैं। तो अभी देखो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई के बदले तो करंट ही आएगा, आई ही हो, और लेकिन सिर्फ 4 पाई आर, अभी आर देखो, आर इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस हियर, सो दैट डिस्टेंस हैज टू बी फाउंड आउट, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये अगर इसको अगर हम सपोज इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं और ये जो पी क्यू है इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये आर इस केस में जो है ना, इट इज द डिस्टेंस हियर, दिस डिस्टेंस एक्चुअली, ये जो डिस्टेंस है ये निकालना हमारा एम रहने वाला है। हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस हियर, दिस इज एक्चुअली आवर आर व्हिच इज टू बी फाउंड आउट हियर, ये आर हमको यहाँ पे निकालना है। हाउ कैन वी गेट दैट, तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस आर है, वर्टिकल डिस्टेंस, अगर से ये वाला डिस्टेंस अगर हमने मान लिया इट इज आर, और हाइपोटेनियस जो है वो तो ऑलरेडी आर है, कैपिटल आर है, राइट। सो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हमको पता है ऑलरेडी, वी नो दैट इट इज कॉस थीटा वाला रिलेशनशिप यहाँ पे हमको मिल जाता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन जस्ट से दैट दिस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा, देखो छोटे ट्रायंगल के अंदर हम यूज करने वाले हैं cos थीटा का फॉर्मूला। सो वी कैन जस्ट से दैट दिस cos ऑफ थीटा विल एक्चुअली इक्वल टू adjacent side which is small r, that is to be found out, and upon capital R which is the radius of circle. So from this, we can just get this small r to be expressed in terms of r and cos theta, so that we can get this small r equal to r into cos theta, correct है। तो अगर ये वैल्यू स्मॉल r का हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर,
तो उससे हमको नेक्स्ट स्टेप पे हमको मिल जाएगा. So this will be r into cos theta. करेक्ट है. So this is r cos theta, and that is to be multiplied with sin alpha plus sin beta. But as we already mentioned here that alpha and beta both are equal to theta here in this case. So therefore we can get this as sin theta plus sin theta, which actually happens to be 2 times of sin theta in this way. And hence finally we are going to get it as mu naught I upon 4 pi r cos theta plus, sorry, into 2 sin theta here in the numerator. Okay, so this is 2 sin theta kept as it is. Okay, and now we can just see here that this sin theta upon cos theta actually happens to be tan theta, right? And hence we can just express it as tan theta, and also we can just cancel this 2 from both numerator as well as denominator, leaving behind 2 here in the denominator, so that in the next step we are going to get it as mu naught I upon 2 pi r into tan theta. Okay, yes, and then this is the, actually we can say the value of B2 here, where B2 is going to be the magnetic induction due to the finite straight current carrying conductor. Okay, which can be given as equation number 2 in this case. Okay, so if we just give this as equation number 2, then we can just add this 1 and 2 so as to get the total magnetic field at point B here. So you can just say that the magnetic field at point B here is going to be actually the sum of B1 and B2, no doubt. So if we just add these two up, then now see here, mu naught I upon 2r and mu naught I upon 2r is going to be common from both of these. Even pi also, see here, this pi is also going to be common, so that we can just take it out orally. So let us take mu naught I upon 2 pi r common, and what we are left inside. So see, in from B1 ये देखो, ये mu naught I upon 2r चला गया, मतलब जो गया वो अगर हमने अगर शेड किया, ये देखो ये mu naught चला गया, I चला गया, 2 भी चला गया, R भी चला गया, और उसके साथ साथ पाई भी हमने बाहर निकाल लिया. तो अंदर में बचेगा क्या? सिंपली वी कैन से 2 पाई minus 2 theta, and that is divided by 2. Okay, ये जो 2 बचा हुआ है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी सब बाहर चला गया. ठीक है, प्लस अभी दूसरा, अच्छा ये प्लस क्यों आएगा समझा ठीक से. मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों मैग्नेटिक इंडक्शंस जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, उसका क्या गारंटी है. So you can just see the current is flowing in this direction here, and the current is flowing in this direction. So if we just apply the right hand rule on both here on the circular current carrying coil, then the magnetic induction will be directed in inward direction, inwards into the plane of this diagram, correct hai? But at the same time, the current in this wire PQ is just flowing in this direction here, okay, from Q to P like this. So if we just apply the right hand rule once again here, तो यहाँ पे भी अगर हमने right hand rule अगर apply किया, तो उस केस में हमको ये मिलेगा कि the magnetic induction at this point O here will be directed inwards once again. अब यहाँ पे जो right hand rule हमको apply करना है वो ऐसे apply करो जिसमें thumb will be directed along Q to P, okay, and curl fingers will give actually the direction of magnetic induction at point O here, which will be directed inwards. So B1 is also directed inwards. We can just see clearly in the diagram. B1 is also directed inwards and B2 is also directed inwards. Therefore, they will add up together, and that's why there is a plus sign in between these two. Okay, so just focus on B2 now. ये जो B2 है उसके अंदर से हमने ये 2 pi r ये सब बाहर निकाल के लिया, तो अंदर में क्या बचेगा. तो देखो ठीक से, जो बाहर निकाल के लिया वो हमने अगर शेड किया, म्यू नॉट बाहर गया, आई बाहर गया, 2 पाई आर पूरा ही बाहर चला गया, तो सिर्फ tan थीटा बचा रहेगा ब्रैकेट में, और इसकी वजह से हमको यहाँ पे सिंपली tan थीटा मिल जाएगा बस. दैट्स इट. एंड देन इफ वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर, then we can just be able to get this mu naught I
upon 2 pi r will be kept as it is. And here if we just take this 2 common and just cancel it out, then we can just be left with pi minus theta as it is here in the bracket, so that we can just get it as pi minus theta plus tan theta, and that is going to be the final answer, which is actually going to be present here, pi minus theta plus tan theta with mu naught upon 2 pi r outside. Yes, so C is actually going to be the correct option here. Okay, so this is all about the whole question. Let us see the next question. Okay, so next question जो है, take this question number 10 here. Okay, so let us see. Read it carefully. A rectangular coil has 100 turns, each of area 50 centimeters square. It is capable of rotation about an axis joining the midpoints of two opposite sides. Okay, so that means there is a rectangular coil. We can just draw it here like this. Okay, so this is a rectangular coil of 100 turns. Okay, so यहाँ पे 100 turns दिया हुआ है. We can just note down this number of turns to be 100 here. And area of cross section is also given to be 50 centimeters square. Okay, and it is capable of rotation about an axis joining midpoints of two opposite sides. Okay, so इस side का midpoint, okay, और इस वाले side का midpoint अगर हम join करेंगे तो इन दोनों के midpoints को join करने वाला जो line है, तो इस line के about वो rotate हो सकता है. That means this whole coil can just rotate about this line. Okay, that is given here. तो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो पूरा कॉइल जो है वो इस लाइन के अबाउट रोटेट हो सकता है. ठीक है. Okay, so current, when a current of 5 ampere is passed through it, तो उसमें से हमने I equal to 5 ampere, तो 5 ampere इतना करंट उसमें से हमने पास किया. तो when its plane is at right angles to the uniform magnetic field, so the magnetic field is here going to be in the direction which is perpendicular to the plane of the coil here in this way. So this can be considered to be the magnetic field. Okay, तो ये जो है ये magnetic field lines है which is directed in this direction here. Okay, this is the magnetic field which is given to be perpendicular to the coil. Yes, so that means plane of the coil is at right angles to the uniform magnetic field and it experiences a torque of 5 Newton meter. Then the magnetic induction or magnetic field will be. Okay, so what is the formula for torque? You know, torque acting due to the magnetic field on a coil is given by the formula torque is equal to NIAB. So we can just find it out. N means number of turns, which is given to 100. I is current, which is already 5. Area of cross section, which is given here to be 50, but that is in centimeter square. So we have to convert it into meter square by 10 raised to minus 4. And B is to be found out, and torque is already given.
that is 5 Newton meter. Okay, so this 5 will just get cancelled, and what we are left in next step here, it is 1, which is going to be equal to 100 into 10 raised to minus 4, actually comes out to be, or we can say 100 into 500, so sorry, 100 into 50 becomes 5000. Okay, and 5000 multiplied by 10 raised to minus 4 makes this decimal point to be shifted 4 digits at the right side, left side, and hence it becomes 1 is equal to 0.5 into b. Okay, so that we can just find out this b to be simply equal to 1 upon 0.5, and that is going to be in Tesla, which is happens to be 2 Tesla as a final one. Let us see the next question. This was actually easy question. This one can also be solved by using the same formula. We can just see now. अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला यूज करके हमको ये भी मिलेगा. A current of 10 ampere is flowing in the wire of length 1.5 meter. नहीं सॉरी, ये अलग फॉर्मूला से यूज करना पड़ेगा. The force of 15 Newton acts on the wire when it is placed in uniform magnetic field of 2 Tesla. Then the angle between the magnetic field and the direction of current is. यहाँ पे simply हमको यूज करना है force is equal to I L B sin theta. Okay, everything is given here. Only the thing is that angle between the magnetic field and current is to be found out. So when that means we want to find out the sin theta here. So we already know that this sin theta is going to be equal to F upon I L B. Okay, so that F, which is given to be 15 Newton, I current is given to be 10 ampere, length of the conductor is given to be 1.5 meter, and also the magnetic induction, which is already given to be 2 Tesla here. So you can just calculate this 10 and 15. अब देखो ये 10 और 1.5 इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बनता है, 15 ही बनता है, जो इस 15 के साथ सीधा कैंसिल हो जाएगा और 1/2 मिलेगा. बट वी नो ऑलरेडी दैट द sin 30 इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1/2. सो अगर sin थीटा इक्वल टू 1/2 है तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए. सो वी कैन जस्ट गेट दैट द एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री इन दिस वे. लेट अस सी द नेक्स्ट. See here, you can just work out this question. In order to pass 10% of main current through a moving coil galvanometer of 99 ohm, the resistance of shunt required is. Okay, so that means we want to find out the shunt resistance here. We know that Ig is actually equal to, और shunt resistance का formula क्या है हमको पता है already. So shunt resistance S is actually going to be Ig upon I minus Ig into G. करेक्ट है, ये है shunt resistance का formula. तो यहाँ पे 10% of main current passing through the moving coil galvanometer. That means the Ig has to be equal to 10% of the total current I flowing through this galvanometer here. मतलब जितना total current है उसका 10% current जो है वो galvanometer में से flow होता है. इसका मतलब galvanometer में से flow होने वाला current पूरे total current के 10% के बराबर है कि नहीं. तो इसलिए हमको ये मिलता है कि Ig must be actually equal to 1/10, क्योंकि 10/100 मतलब ये वो बन गया 1/10. So it will be 1/10 times of I. Okay, so if we just put it here, then we can be able to get this S. Okay, if we replace all the values, S is to be found out. Ig is given to be 1/10 of I. Or better, we can just express this I in terms of Ig, in fact.
तो अगर I को हम एक्सप्रेस कर देंगे 10 टाइम्स ऑफ IG की इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे IG है, so just keep it as it is and just replace I in terms of IG. That means we get it as 10 times of IG minus IG itself, and that is multiplied by G here, which is given to be 99 ohm. गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है तो वो दिया हुआ है ऑलरेडी 99 ohm. So if we just replace it here, then we can just be able to get this IG upon, we can just take this IG common from here and get this 10 minus 1, which is going to be 9, and that is multiplied by 99, so that this 9 gets cancelled with 99, leaving behind 11, and IG also gets cancelled, so that we can get 1 is going to be the shunt resistance, which is already there in the option C here. Let us check next one. See this question number 16th here. Rectangular coil of area 5 into 10 raised to minus 4 meters square and 40 turns is pivoted. Suppose this is a rectangular coil. Okay, and it is pivoted on its vertical sides. The coil is in horizontal field of 80 Gauss. That means there is a magnetic field of 80 Gauss produced here in the space. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है 80 Gauss. ठीक है. अभी देखो ये गॉस जो है, तो गॉस इज द SI CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, and also the current of 0.2 milliampere, it produces an angular deflection of 20 degree in the coil. Okay, तो इस coil के अंदर 20 degree इतना deflection वो produce करता है. Then what is the torsional constant of spring connected to the coil? Yes, so torsional constant मतलब हमको C निकाल के दिखाना है. Let us try to find it out. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है R is equal to C upon NBA into theta. Okay, तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और टॉर्शनल कांस्टेंट मतलब C हमको निकाल के दिखाना है. तो C के लिए अगर रीअरेंज करेंगे इसको तो हमको मिलेगा NBA upon theta. So just replace all the values here. Number of turns is already given to be 40. Magnetic induction is already given to be 80 Gauss, but don't forget this to convert it into SI units. Magnetic induction is already given to be 80 Gauss, but 1 Gauss happens to be 10 raised to minus Tesla, and that's why we can just write it as 80 into 10 raised to minus 4 Tesla. Okay, so then we can just be able to replace this here. So here it will be 80 into 10 raised to minus 4, and that is to be multiplied with current, which is already given to be 0.2 milliampere. Again, convert it into ampere. So 0.2 milliampere मतलब कितना हो गया? So 0.2 milliampere can be found written to be 0.2 into 10 raised to minus 3 ampere actually. And area of cross section is again given already, that is 5 into 10 raised to minus 4 meter square. Don't worry about it, it is already given in meter square. So, and meter square is a standard unit, so we can just replace it by that. So we can just have this as 5 into 10 raised to minus 4 meter square, and theta is already given to be 20 degree. Okay, so keep it in degree only because we want the torsional constant to be in Newton meter per degree only. So therefore डिग्री को ऐसे ही रखो. अगर यहाँ पे रेडियन में चाहिए होता तो फिर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते थे. तो just keep it as it is in degrees here.
Okay, so first of all, this 20 will just get cancelled with this 40, leaving behind 2 in the numerator. And this 2 multiplied with 5 comes out to be 10. Okay, so what we are going to get is, so this 2 multiplies with 5 becomes 10. And this 80 multiplies with 0.2, so that it becomes 16. Okay, this is 16. And बाकी जब सब 10 के पावर्स हैं, तो अगर ऐड करो तो 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4, and 10 raised to minus 3. All these 3 add up together become 10 raised to minus 11 actually. So therefore it becomes 10 raised to minus 11 here. Okay, and if you want to write it in terms of 1.6, because in options all the options are containing 1.6 here, so 1.6 into 10 raised to minus 9 will be the option. Okay, which is already there in option number A here. That's it. Let us see the next question. See this 23rd question here. Okay, just read it carefully. The magnetic induction at a point P, which is distant 4 centimeter from a long current carrying wire, is 10 raised to minus 8 Tesla. Suppose this is the long current carrying wire and there is a point P here at a distance 4 centimeter. तो ये समझो पॉइंट P जो है वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और वहां पे उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, सो उसको हम बोल देंगे सपोज B1 है. ठीक है. The field of induction at a distance 12 centimeter from the same current would be, मतलब अभी सेम करंट कैरिंग कॉइल से अगर एक दूसरा पॉइंट जो कि 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो उस पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. सपोज दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी Q हियर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन B2 हियर. सो सी B1 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है. In general, magnetic induction at a point due to the straight infinite current carrying conductor is given by mu naught I upon 2 pi r. करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास है. सो B1 के लिए क्या आएगा, mu naught I upon 2 pi r1 आएगा और B2 बनेगा mu naught I upon 2 pi r2. करेक्ट है. And if we just take the ratio, so B1 upon B2 actually happens to be R2 upon R1 here. Since B1 upon B2, B1 is already given, so we can just replace it by that and get it as 10 raised to minus 8 Tesla here. B2 is to be found out, but R2 is already given to be 12 and R1 is already given to be 4 here. Okay, ये total जो distance है तो वो 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर. ओके, और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है करके. यहाँ पे अगर हम सपोज 12 और 4 को रिड्यूस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, एंड हेंस वी कैन जस्ट शफल दिस टर्म्स एंड गेट दिस एज 10 raised to minus 8 upon B2 is equal to 3, which makes 10 raised to minus 8 upon 3 is equal to B2, and hence B2 happens to be actually 1 by 3 into 10 raised to minus 8 Tesla, which can also be written as 0.33 recurring into 10 raised to minus 8.
But as there is no option like this, so we can just shift the decimal point. So we can just write it as 3.3 into 10 raised to minus 9 here, which is already there in option number A here, which must be the correct one. Let us see this question number 25 here. Range of voltmeter is V when 50 ohm resistor connected in series. Its range gets doubled when 500 ohm resistance is connected in series. What is the galvanometer resistance? Okay, so suppose this is the galvanometer, and when a resistance of 50 ohm is connected in series with this galvanometer resistance, then its range becomes V. Okay, उसका range जो है वो V बन रहा है, ठीक है. But when the same galvanometer is suppose connected with a series resistance of 500 ohm, तो 500 ohm जब वो कनेक्ट किया जाता है तो उसका जो रेंज है वो डबल बन जाता है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है 2V होगा रेंज उसका, बराबर. तो फिर भी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है वो हमको ढूंढ के निकालना है. ओके, तो देखो यहाँ पे हमको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. RS, that is the series resistance that is to be connected in series with the galvanometer, is always given by the range V upon IG minus G. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा है, वही हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है. सो इफ यू जस्ट ट्राई टू यूज इट हियर 2 times, one for this situation and other one for this one situation. Okay, so if you just use it for the first situation, this RS has to be replaced by 50 here. तो RS के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा. और रेंज जो है वो तो उन्होंने V देके रखा है करके, यहाँ पे रेंज के बदले तो V आएगा नो डाउट. और IG जो है तो IG एक्चुअली लेकिन दिया नहीं है, सो जस्ट कीप इट एज इट इज IG. एंड G भी दिया नहीं है, सो जस्ट कीप इट एज इट इज. ओके, एंड इन दिस केस अब यहाँ पे अगर हम सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करते हैं, दिस कैन बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1 हियर. If you just construct equation number 2 by taking this RS as 500, V is replaced by 2V because it is given that the range is doubled here in this case. So V will be replaced by 2V upon IG is just kept as it is, minus G is again kept as it is, and this is going to be equation number 2 here. Okay, so in order to solve these equations, we'll have to find out the value of V upon IG from this here and put it here. Okay, तो V upon IG का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन से देखो, तो हमको मिल रहा है V upon IG is equal to 50 plus G, करेक्ट है. So this is the value of V upon IG which is obtained from this equation, first equation here. And if we just try to use it here, yes, V upon IG के बदले अगर उसको डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो हमको मिलेगा 500 is equal to 2 times of V upon IG का वैल्यू जो कि यहाँ पे 50 plus G के बराबर है, और minus G which is kept as it is. And then we can just be able to solve this further, so that we can just get it as 500 is equal to 2 into 50 is 100 plus 2 into G becomes 2G, and minus G is just kept as it is, so that this 2G minus G becomes actually simply G, and 500 minus 100, ये 100 उस तरफ चला जाएगा तो वहाँ पे 400 बचेगा. So we can just get that this 400 is equal to G, means that this value of resistance of galvanometer is going to be actually 400 ohm, which is already there in the option number D here in this way. Okay,
Yes, so let us declare here that this MCQs can be finished. ये सारे MCQs हमने यहाँ पे किए already. Okay, we can just okay, Ankita. Yes, you are sending the photos. अभी send किए तुमने? Yes. Okay, just let me finish this lecture first.